welcome back. We are here again with the 9th lecture of this series on current affairs. I hope you are having a good time with this lecture series, and I hope it's being helpful to you. As we have done in the previous lectures, divided the whole lecture into two parts. The first one is Prelims Focused Current Affairs, and the second one is Prelims cum mains focus. That is, those aspects of the current events that require a detailed analysis. ठीक है, तो उसको हम आधे लेक्चर के बाद करेंगे. like second part of the lecture will be prelims cum mains and the first part will be prelims focused current affairs. ठीक है, so we have three important topics from the last week, okay, that I think needs a discussion. ठीक है, बाकी important topics you will be reading, ठीक है, from all the sources that you have at your disposal, but I think these three topics need our intervention. ठीक है, so the first one is power of governor to summon assembly. Why is this in news? This is in news because Kerala government has sought for the second time. The Kerala government has for the second time tried to obtain the governor's nod to summon special assembly, ठीक है, to discuss the farm agitation. So why second time? Because for the first time governor did not acknowledge the request of the cabinet or council of ministers to summon a special session of assembly, citing the reason that governor was not sure as to why the council of ministers was calling for an assembly. So what are the constitutional issues involved here? ठीक है, तो article 174 of the constitution says that governor shall summon house at the time and place he or she thinks fit. ठीक है, article 174(2)(a) says that a governor may from time to time prorogue, and article 174(2) allows the governor to dissolve the assembly. That means the governor has three powers with regard to the assembly, that are summoning, prorogue and dissolution of the assembly. But article 163 says that, ठीक है, तो article 174 gives power to the governor regarding the assembly, and these powers are summoning, ठीक है, prorogue and dissolution. ठीक है, okay. These are the powers of governor regarding summoning. Summoning means calling people to a place. Fine. Dissolution means the end of the session, end of the assembly. ठीक है, so these are the powers. But article 163 says that the governor shall exercise his executive powers on the basis of the recommendation of the council of ministers. ठीक है, council of ministers headed by chief minister. Okay, headed by chief minister. That means a governor is bound. Okay, there's a difference between the powers of president and governor, and whenever we are studying governor or president, we should always make a comparative analysis. That makes our topics easier to understand and easier to remember as well, because our brains are like wired to be analytical. If you are trying to be analytical, you will remember things for a longer period of time. So article 163 says that the governor should act on the aid and advice of council of ministers headed by chief minister, except there's a catch in this article. There is an exception, ठीक है, but in case of president is bound to act whereas president is bound to act on the aid and advice of council of ministers. ठीक है, president is bound, ठीक है, but governor is also most of the times bound to act on the aid and advice of the council of ministers. But there are certain exceptions where the constitution grants constitutional discretion
ठीक है, constitutional discretion. President does not has any constitutional discretion. He only has situational discretions. Situational discretion in the sense कि in case the union government, the Lok Sabha elections are conducted and there is no clear majority and no party is claiming to form a government, then president can invite any of the party, ठीक है, to form a government in the center, and that is a situational discretion. That is not a constitutional discretion. ठीक है, constitutional discretion वो discretion होगा that has been expressively mentioned in the constitution, but there are certain constitutional discretions available to governor. ठीक है, तो इसलिए governor is having higher powers as compared to the president of India. ठीक है, governor is having higher executive powers as compared to the president of India. Both are executives. ठीक है, तो except in the cases of constitutional discretion. ठीक है, constitutional discretion, that is an express article 163 में expressively mentioned है कि the governor should act on the aid and advice of council of ministers except where the constitution of India provides for his discretion. ठीक है, तो as we all know, in practical, governor is basically works as an agent of what? Union government. Although the Supreme Court of India has clarified that governor is a constitutional post and it is not an agent of government of India, but still, why? Because governor does not have a surety of tenure. ठीक है, surety of tenure नहीं है तो fine. Governor does not have a surety of tenure. Governor has to necessarily act on the, like, since it does not have a surety of tenure, so it can be removed at the whim of, this is an important term because it was an observation made by Sarkaria and Panchi Commission, both, the whim of central government. ठीक है, क्यों? क्योंकि central government appoints and removes both. ठीक है, and there is no procedure mentioned in constitution for removal or appointment of governor. It is based on the sole discretion of president. President appoints governor, and president, while appointing governor, acts on the aid and advice of council of ministers of the union government. ठीक है, तो basically union government appoints what? Governor. ठीक है, that makes governor the authority of governor becomes inferior in the sense कि in practical terms, governor most of the time acts as the union government or the president wishes. ठीक है, because the removal and both appointment are controlled by central government or the president of India. ठीक है, तो होता क्या है, मेन बात. Okay, back to the issue. Earlier on 23rd December, governor has refused to summon. ठीक है, this was the second time, but now the governor has given his permission to summon the assembly, the special session of assembly. ठीक है, fine. Now we have discussed. There was a constitutional crisis in Arunachal Pradesh in 2016 when governor summoned the assembly without even the aid and advice of council of ministers. ठीक है, हुआ ये कि गवर्नर ने असेंबली स्पेशल सेशन समन कर दिया and then the speaker disqualified certain MLAs for anti-defection law. ठीक है, तो यहाँ पे दो सुप्रीम कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए. दिस इज अ वेरी लैंडमार्क केस, नाबम रेबिया केस. ठीक है, यहाँ पे जजमेंट ये था, अ गवर्नर कैन समन प्रोरॉग एंड डिसॉल्व द हाउस बट he has to necessarily act on the aid and advice of council of ministers while doing so. That means summoning, proroguing and dissolving is not a constitutional discretion of the governor. That means governor is bound by the aid and advice of council of ministers while exercising his power to summon, prorogue and dissolve the assembly. Fine. And the second thing was, the second observation in Nabam Rebia case was that a governor cannot set the legislative agenda for the assembly. That is, a governor cannot set the
Legislative agenda. Governor cannot decide what the house should do, why the house should be summoned. Who sets the legislative agenda? The government. Okay, the prime minister or the chief minister in case of states will set the legislative agenda. Fine. The legislative agenda will not be set by governor. Governor can only summon by using his executive authority. ठीक है. तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है. कॉन्फ्लिक्ट ये था कि केरला गवर्नर डिड नॉट समन फॉर द फर्स्ट टाइम when the chief minister of Kerala asked him to summon a special assembly session for the discussion of farmer agitation. But later he considered the ground and he did summon. The date has been fixed for 30th of the December. ठीक है. So these articles are important. Article 174 that gives the power to governor with regard to the assembly, summoning, proroguing and dissolution, and article 173 that describes the constitutional power of the governor with regard to how he should exercise his executive powers on the basis of the advice of council of ministers and otherwise constitutional discretion जो भी constitution में provided है. ठीक है. तो governor office becomes very important. Every year in mains there is a question. Almost every year in mains there is a question on federalism. ठीक है. And even in prelims also federalism is very important. Federalism is a very important topic from exam point of view. ठीक है. Granville Austin, ठीक है. Granville Austin was a very renowned constitutional scholar. Granville Austin. He said that Indian federalism is cooperative federalism. ठीक है. Cooperative federalism. And what are the other features of Indian federalism? Indian federalism is basically what? India is a quasi-federal. India is not completely federal. ठीक है. Neither completely unitary. ठीक है. What else can be said about it? Quasi-federal, cooperative federalism, and what else? Federalism with unitary bias. ठीक है. Federalism with unitary bias. That means the union government is having excessive powers in the federal structure. And that is inherently provided by the constitution. ठीक है. तो governor becomes a very important pivot in this federation. ठीक है. क्यों? क्योंकि no other country has a governor who is nominated by, this is union, okay, this is state. ठीक है. No other country in the world has a governor nominated by the central government who acts as the head of the state for the states. ठीक है. No other state, no other country, only India. That means a union has overriding powers. ठीक है. क्यों? क्योंकि state bills become an act when governor assents. ठीक है. And governor is not elected, he is a nominated body. तो गवर्नर से रिलेटेड ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम गवर्नर का डिस्कशन थोड़ा और कैरी ऑन करेंगे. And we will discuss a few recommendations of Sarkaria and Panchi commissions. ठीक है. Sarkaria and Panchi commissions were very important commissions on basically center state relations. ठीक है. Sarkaria and Panchi commission. ठीक है. These two commissions both made a recommendation that the governor should. Panchi commission especially made a recommendation that the person who is being appointed as a governor should not have been in a active political life for at least a couple of years prior to being appointed as a governor. That means there should be a difference between a person's active political life and the time he gets appointed as governor. That means Panchi commission basically stresses on the fact that politicians should not be appointed as governors because of obvious conflict of interests. ठीक है. Similarly, Sarkaria Commission also made the recommendation that the people who are appointed as governors should be people of repute and of a high moral character in the public life. ठीक है. The second recommendation is both made an observation that the post of governor is a constitutional post. It should not act as an agent of union government. ठीक है.
The third recommendation made by Panchi Commission was कि the power of union government to remove the governor should not be used arbitrarily. ठीक है, होता क्या है कि after every लोकसभा इलेक्शन यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स में अपने गवर्नर्स अपॉइंट करना स्टार्ट कर देती है, जितने स्टेट्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू रिमूव अ गवर्नर, तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नर्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं और अपने पीपल को ये लोग गवर्नर बना देते हैं, ठीक है। तो अब इन स्टेट्स में अगर वो रूलिंग पार्टी है जो कि यूनियन की पार्टी से अलग है, ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, यहाँ पे फेडरल कैरेक्टर इंडिया का जो है वो डेंटेड होता है। लाइक ऑब्वियसली इन ऑल द करंट रिजीम जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट कर रहे हैं गवर्नर के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। तो फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी वेल अडॉप्ट विद दिस टॉपिक, एंड गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Okay, the second topic at hand is CII and Confederation of Indian Industries and FICCI to seek a pause on wage code. These are both lobby groups, ठीक है। lobby groups क्या होते हैं? lobby groups are special interest groups that lobby that present their case to the government, and they lobby in the government for specific purposes. Like CII and FICCI are both industrial lobby groups. ये इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट को पुश करते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। ऐसी बॉडीज को, ऐसे हम बॉडीज को क्या कहते हैं? लॉबी ग्रुप्स। फाइन, ग्रेट। CII and FICCI to seek a pause on wage code. Okay, the first lecture I have taught wage code. Please go through the wage code. I have explained it in a bit of detail, ठीक है। We'll be explaining in a very brief about the wage code. To get a proper idea of wage code, you should go to the first lecture. You can browse through the YouTube of our channel, ठीक है। तो why are they seeking a pause on the implementation of certain clauses of the wage code, ठीक है। Okay, first of all we should have a brief analysis of wage code, ठीक है। Wages Code Act 2019 was recently implemented, ठीक है, and it has subsumed the 4 acts, ठीक है, the 4 acts of central government. These are central government acts, ठीक है। तो ये concurrent list में है, ठीक है। wages and industries, they are all in concurrent list. Concurrent list में होने का मतलब labor laws basically are in concurrent list. Concurrent list means both union and state can legislate, ठीक है। So what union government has done is it has okay, concurrent list में अगर कोई issue है, ठीक है, जिसपे both state and union can legislate, तो which अगर वहाँ पे overlapping या conflicting है, मान लो यूनियन गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया किसी कॉन्करेंट लिस्ट के इशू पे, एंड इवन स्टेट गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ ऑन द सेम इशू, तो व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से? कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट लॉ विल एग्जिस्ट टिल द रिपग्नेंसी विद द union law. That means state law will be valid till the amount till it is not repugnant with the central law. मतलब central law के conflict में जहां तक नहीं रहेगा वहां तक स्टेट का लॉ वैलिड रहेगा। जो अगर conflict में है तो वहां पे सेंटर का लॉ वैलिड रहेगा, ठीक है। फाइन, यानी सेंटर हैज अ डोमिनेंस ओवर स्टेट लॉज इन कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। एक यहाँ पे कैच है, एक स्पेशल क्लॉज है कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई ओके फॉर एग्जांपल देयर इज लाइक लेबर, ठीक है, लेबर कोड्स आर इन, लेबर लॉज आर इन व्हाट, लेबर लॉ इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, फाइन। बोथ स्टेट एंड सेंटर कैन मेक लॉज। फॉर एग्जांपल अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र makes a law, ठीक है, and there is already a law on the very same issue that has been made by Union Government of India, ठीक है, Union of India, ठीक है। तो and these both laws are in conflict with each other,
these both laws are in conflict with each other. तो प्रेसिडेंस किसका होगा? यूनियन गवर्नमेंट के लॉ का प्रेसिडेंस होगा. दैट मीन्स वट एवर दिस लॉ सेज इट विल हैव द प्रेसिडेंस ओवर वट एवर दिस लॉ सेज, एंड जहां यहां पे दोनों में कंफ्लिक्ट होगा दिस लॉ विल प्रिवेल. वन कैच, द कैच इज if the law made by Maharashtra Assembly has been reserved by governor for presidential assent. ठीक है? If that law has been reserved by governor for presidential assent and president has assented to that law, then this law will have precedence. That means this law will be valid. The clause, even if it is in conflict with the union law, it will be valid. Why is this catch made? ठीक है? तो यहाँ पे you need to understand the beauty of our constitution. President acts on the aid on advice of Council of Ministers of Union Government. Fine. If a law that has been passed by Maharashtra Assembly has been reserved by the governor, and the governor has passed the same bill to president for assent, and the president assents to the law, that means while assenting to the law, the president would have been acting on the aid and advice of Union Government of India. ठीक है? He cannot express his assent without the advice of Union Government of India. ठीक है? और इसी गवर्नमेंट ने ये लॉ भी बनाया है. ठीक है? दैट मीन्स अगर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्रीज कि ठीक है इस स्टेट में ये क्लॉज रहने देना चाहिए और बाकी जगहों पे ये क्लॉज चलने देना चाहिए, तो ये एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को कि असेंट कर दो. फाइन. अदरवाइज ये क्या कहेंगे कि असेंट मत दो. अगर असेंट नहीं देंगे तो नेचुरली यूनियन लॉ का प्रेसिडेंस होगा महाराष्ट्र या स्टेट लॉ पे. अंडरस्टूड? तो बोथ केसेस में यूनियन ऑफ इंडिया विल बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर. ठीक है? व्हाई? बिकॉज प्रेसिडेंट व्हाइल असेंटिंग टू बिल्स वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है? ग्रेट. ओके. तो अब जो सेंट्रल लॉज हैं, इन चारों सेंट्रल लॉज को यूनियन गवर्नमेंट ने कोडिफाई किया है, कोड बनाया है, कोड ऑन वेजेस एक्ट. मतलब बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज थे, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट. दीज वर द सेंट्रल लॉज ऑन वेजेस. ठीक है? ये वेजेस पे लॉ थे. ठीक है? दीज लॉ डिसाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉइंट है वेजेस के बारे में, दीज लॉ वर फॉर देम. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कोड ऑन वेजेस एक्ट इन चारों लॉज को कोई बेहतर तरीके से एक लॉ में इंप्लीमेंट किया है. ठीक है? उससे क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इन चारों लॉज में वेज का डेफिनेशन में डिफरेंस था. वेज. ठीक है? जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वेज वॉज डिफाइंड फॉर अ वर्कर अंडर अ वेरी स्टैट्यूटरी लिमिट. ठीक है? मिनिमम वेजेस एक्ट में वेजेस का डेफिनेशन कुछ और था. फाइन. तो इन एनोमलीज को हटा के गवर्नमेंट एक कोड ऑन वेजेस एक्ट लाई, एंड इन सारी एनोमलीज को हटा के यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए किया है. ठीक है? These are a brief features of code on wages act. We will be dealing ki why the FICCI and CII are seeking a pause on implementation of code on wages act. ठीक है? So first of all, unlike payment of wages act which is applicable to employees drawing salary below a statutory limit. ठीक है? Payment of wages act was for basically workers, laborers, है ना, और जो अनस्किल्ड लेबर जो काम करते हैं, है ना, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल था. बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है? एंड द मिनिमम वेजेस एक्ट व्हिच इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन शेड्यूल्ड एस्टैब्लिशमेंट. शेड्यूल्ड एस्टैब्लिशमेंट्स क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का एक शेड्यूल है. ठीक है? अब बेसिकली उसमें सारे स्टेट्स, हर स्टेट नोटिफाई कर सकता है कि कौन से एम्प्लॉयमेंट जो है वो पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट में आएंगे. ठीक है? मिनिमम वेजेस एक्ट एक एक्ट है. ठीक है? अब उस एक्ट में हर स्टेट के पास पावर है कि वो शेड्यूल प्रिस्क्राइब कर सकता है. उस शेड्यूल में क्या होगा, कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट्स होंगे. एम्प्लॉयमेंट लाइक ईंट की भट्टी हो गई, है ना, लेबर हो गया, कंस्ट्रक्शन लेबर हो गया, फाइन, रेडी वाले हो गए. तो ऐसे लोगों को एक सेक्टर हो गया. ठीक है?
तो ये दो लॉज किन चीजों पे काम करते थे? पहले तो वेज सीलिंग, मतलब एक स्टैट्यूटरी लिमिट से कम वाले लोगों के लिए ही पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, और एक स्पेसिफिक सेक्टर जो कि उस शेड्यूल में प्रिस्क्राइब्ड है। कौन से शेड्यूल में? मिनिमम वेजेस एक्ट का जो शेड्यूल है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है। अगर उन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में कोई एम्प्लॉयमेंट उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट से बाहर है तो वो मिनिमम वेजेस एक्ट में नहीं आएगा। लेकिन कोड ऑन वेजेस एक्ट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्टर या स्टैट्यूटरी लिमिट, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है, ठीक है। इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज सीलिंग एंड सेक्टर। आप कितना भी रुपया कमाते हो या किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के आप अंदर में आते हो। फाइन। कोड इंट्रोड्यूसेस द कांसेप्ट ऑफ फ्लोर वेजेस, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट फ्लोर वेजेस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेजेस सेट कर देगी जियोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के लिए, वेस्टर्न इंडिया के लिए, सदर्न इंडिया के लिए, है ना, फिर नॉर्थ इंडिया के लिए, है ना। रीजनल बेसिस पे या जियोग्राफिकल बेसिस पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इन और लिविंग स्टैंडर्ड्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन सारे पैरामीटर्स का एनालिसिस करके सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स अ फ्लोर वेज फॉर अ जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। लाइक फॉर यूपी फॉर एग्जांपल, एक फ्लोर वेज गवर्नमेंट ने सेट कर दी कि 360 रुपीज पर डे अनस्किल्ड लेबर, फॉर अनस्किल्ड लेबर। तो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी फ्लोर वेज, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो मिनिमम वेजेस इशू करती हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू अ मिनिमम वेज बिलो द फ्लोर वेज, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू नेसेसरली इशू अ मिनिमम वेज अबव द फ्लोर वेज, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने की एक लाइक इट्स अ गुड थिंग दैट फ्लोर वेजेस या मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज एंड दिस इज द क्लॉज जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्लिक्ट हुआ है, या इस क्लॉज की वजह से फिक्की एंड CII आर सीकिंग अ पॉज ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेज कोड। अब ये वेज कोड है क्या, ठीक है। इसके लिए थोड़ा हम बेसिक समझने की कोशिश करें कि सैलरीज कैसे मिलती हैं, ठीक है। सैलरीज का स्ट्रक्चर या ब्रेकअप कैसे होता है, कॉर्पोरेट में या प्राइवेट सेक्टर में कैसे सैलरीज मिलती हैं। तो सैलरीज में बेसिकली क्या होता है? बेसिक सैलरी होती है, ठीक है, बेसिक सैलरी, HRA, ठीक है, फिर मेडिकल अलाउंस, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट या कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, ओके। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं? व्हाट दे डू इज दे कीप द बेसिक पेमेंट लो, फाइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन हैज अ मंथली सैलरी ऑफ ₹50,000, ठीक है, they keep this basic salary around 20 या 15,000, ठीक है। HRA दे दिया 18,000, ठीक है, मेडिकल दे दिया और ये दे दिया। तो ऐसे सैलरी का ब्रेकअप होता है। अब व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ कीपिंग द बेसिक्स लो, ठीक है। EPFO एक्ट जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है, EPF एक्ट mandates that both the employee and the employer, है ना, जो एम्प्लॉई है और जो एम्प्लॉयर है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ पर्सन, ठीक है, बाय द नेम ऑफ X इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी Y, ठीक है। तो बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर विल हैव टू कंट्रीब्यूट 12% ईच, ठीक है, इन दोनों को ही 12% ईच ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अगर बेसिक सैलरीज कम है तो उसका 12% भी कम होगा। दैट मीन्स जो एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है, कंपनी का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाता है, अंडरस्टूड, फाइन। व्हाट हैपेंस इज द टेक अवे सैलरी, द टेक होम सैलरी इज हाई, बट द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन गेट्स रिड्यूस एंड दैट इज अ सेविंग फॉर द कंपनी, ठीक है। इफ बेसिक्स आर इंक्रीज्ड तो उसका 12% इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये जो रिटायरमेंट के बाद फंड मिलता है या प्रोविडेंट फंड्स जो होते हैं हमारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बेसिकली, उसमें एम्प्लॉयर हैज टू कंट्रीब्यूट 12%, ठीक है। अगर ये बेसिक ही लो रखेंगे तो 12% भी लो रहेगा, ठीक है। बट व्हाट दिस न्यू लॉ सेज इज
the code mandates that allowances cannot exceed 50% of the total salary. That is, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनीज को अपना बेसिक पे बढ़ाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि टोटल सैलरी जो है 50,000 रुपीज है. ओके सॉरी, ओके, मतलब दैट मीन्स this is the basic pay and these are allowances. That means the allowances cannot exceed 50 मतलब 25,000. ठीक है. If the total salary is 50,000, the allowances cannot exceed 25,000. Fine. That means the 50%, ठीक है, मतलब आधे से ज्यादा, टोटल सैलरी का आधे से ज्यादा नहीं हो सकता अलाउंस के फॉर्म में. ठीक है. तो हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प? दिस इज गोइंग टू हेल्प ऑब्वियसली द वर्कर्स. व्हाई? बिकॉज देयर कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड्स विल इंक्रीज, बिकॉज द कंपनीज विल हैव टू इंक्रीज द बेसिक. अब वो सैलरीज तो कम रिड्यूस कर नहीं देंगे अपने एम्प्लॉयज की, तो व्हाट दे विल हैव टू डू, दे विल हैव टू रिड्यूस दिस अलाउंसेस को रिड्यूस करके और इस सैलरी को बेसिक में शिफ्ट करना पड़ेगा, सो दैट 50% वाला क्राइटेरिया मैच हो सके. फाइन. इसके लिए गवर्नमेंट ने, बट दिस इज एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ कंपनीज इन द वेक ऑफ कोविड सिचुएशन. कोविड की वजह से ऑलरेडी कंपनीज आर कैश स्ट्रैप्ड. उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनीज आर आस्किंग द गवर्नमेंट टू पुट अ होल्ड, है ना, टू पुट अ होल्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस क्लॉज ऑफ द वेज एक्ट. ठीक है. एज आई सेड, द ईपीएफ एक्ट मैंडेट्स द कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ टू द ट्यून ऑफ 12% ऑफ द बेसिक सैलरी. तो इसमें अपना 12% कंट्रीब्यूशन बचाने के लिए पहले कंपनीज क्या करती थी, बेसिक सैलरी को ही लो रखती थी, और जो सैलरी टेक होम सैलरी होती थी दैट वाज मेजरली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, अलाउंसेस. ठीक है. नाउ द एम्प्लॉयर विल हैव टू नेसेसरली रिड्यूस द अलाउंसेस टू 50%. फाइन. पहले 70-75% के अराउंड अलाउंसेस होते थे और बेसिक सैलरी 20-25 के अराउंड ही बेसिक सैलरी होती थी. Fine, but now this will have to be done. तो please go through the Wages Act. Wages Act, Code on Wages Act के लिए first lecture जो हमारा है, please go through that. आत्मनिर्भर भारत has also been explained in that, and that is also an important topic. Fine. The third issue at hand is inner line permit. ठीक है. Why is this in news? Because Meghalaya civil society groups have renewed the calls for British era inner line permit. ठीक है. What is inner line permit basically? These are the northeastern states. ठीक है. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम. ओके. These areas in this color, जो ये एरियाज हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTAD. ठीक है. और ये एरियाज हैं कार्बी आंगलोंग एंड दीमा हसाओ, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम के. मेघालय में पूरा ही मेघालय एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ शिलोंग, एंड त्रिपुरा में 60% ऑफ त्रिपुरा इज अंडर 6th शेड्यूल. क्या है? 6th शेड्यूल. ठीक है. दीज आर शेड्यूल्ड एरियाज. ठीक है. दीज एरियाज इन द ब्लू, ठीक है, दीज एरियाज हैव इनर लाइन परमिट रेजिम. फाइन. इनर लाइन परमिट का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है, दिस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वुड. ठीक है. तो यहाँ पे वुड बहुत ज़्यादा था. इवन म्यांमार, दैट रीजन वाज आल्सो प्राइम रीजन फॉर वुड, कलेक्टिंग वुड. ठीक है. टिम्बर बेसिकली. तो ब्रिटिश वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर कमर्शियल इंटरेस्ट्स. ठीक. ओके. दे implemented this Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873. What did this act do? This act had two terms. ठीक है. The first one was British subjects. Okay. British subjects. British subjects. Okay. That is those subjects. British subjects मतलब obviously Indians. Fine. Indians were not, Indians entry and trade was regulated in these areas. ठीक है. By this Bengal Eastern Front Regulation Act. That means the British subjects would have to take permission from the British governor, okay, to visit these areas and conduct trade. ठीक है.
तो क्यों? Because their commercial interests were protected in the region. After the independence of India, India adopted this act and only changed the British subjects to citizens. That is, now the citizens will have to take the permission of the government. ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. The Indian citizens will have to take permission of state governments to visit these areas. ठीक है. And this is inner line permit regime. Inner line permit is basically a document that specifies, okay, inner line permit is for Indian citizens only. It is not for foreign tourists. If a foreign tourist wants to visit, he will have to obtain another document. Fine. And that is not inner line permit. It is it is protected area permit. Fine. अब इनर लाइन परमिट का मतलब क्या हुआ? इनर लाइन परमिट एक डॉक्यूमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है to access the regions. Like Arunachal Pradesh is completely under inner line permit regime. If you want to visit Arunachal Pradesh, you will have to take the permission of state government by applying online and offline both. ठीक है. And then they will give you a document. It will be a pass. The dates you are going to stay in Arunachal and the area you are going to visit, both will be mentioned on the pass. Fine. So why now this inner line permit regime? इसका अभी ये start क्यों हो गया है? Why are these civil society groups all calling for inner line permit regime? Okay. Manipur launched an online portal for issuing inner line permit in 2019. ठीक है. So I have mentioned these three things so that you can keep a track as to what is going on. ठीक है. Like Meghalaya passed a similar amendment to Meghalaya Residence Safety and Security Act, similar amendment to inner line permit regime, है ना? But it does not exclusively say that it is an inner line permit. Fine. But it obviously it says that people who want to visit Meghalaya will have to apply online and then obtain a pass from the government, and then only they can visit the specified areas. Okay. Okay. What is an inner line permit? Okay. What happened was Citizenship Amendment Act last year, a lot of protest was going on. ठीक है. वो इसलिए था क्योंकि all these people, ठीक है, Christians, Hindus, Jains, Sikhs, okay, and Buddhists, all these people who have come from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan will become citizens of India from the CAA route. Now what happened is there's a huge influx in almost all the northeastern border states with Bangladesh. ठीक है, illegal immigrants का बहुत huge inrush है. Now what these people are saying, people from these regions are saying, is that CAA will provide those illegal immigrants citizenship, but government has assured that all these regions which are in inner line permit regime and the sixth schedule will be exempt from that. ठीक है. But people are having serious doubts about the fact कि जो people आ गए हैं पहले से and they are living, they will be granted the permanent citizenship, and that can affect the demography of the region. ठीक है. And that is why they are calling for inner line permit, यानी to counter the migrant influx. ठीक है. And also in the wake of Citizenship Amendment Act, they are protesting, they are asking कि inner line permit should be brought. Fine. Okay.